Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about the basic definition and the basic concept and overview of preventive and restorative materials. So let's start the video. Restorative materials. Metallic, ceramic, metal ceramic or resin-based substance used to replace, repair or rebuild teeth and are to enhance aesthetics. Restorative material can be metallic, maybe ceramic, maybe metal ceramic, or maybe resin based. The purpose of restorative material is to replace, repair, and rebuild teeth or to enhance aesthetics or appearance. So, this is the definition of restorative materials in dentistry. Various types are present metallic, ceramic, metal ceramic, and resin based substances. Separate video on each one is present in the playlist you can watch, but the basic definition of restorative material is to replace, repair, and rebuild teeth. They have further two types: direct restorative material and indirect restorative material. So, what is direct restorative materials? A cement, metal, or resin based composite that is placed and formed intraorally to restore teeth and or to enhance aesthetics. हम डायरेक्टली एक रेस्टोरेटिव मटेरियल को माउथ में पुट करते हैं और माउथ में ही बनाते हैं प्लेस्ड एंड फॉर्म इंट्राओरली सो दिस इज द डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल they are not made or not prepared or not placed on model they are placed directly in oral cavity so direct means they are directly put in intraorally and placed and formed in intraorally. Indirect restorative material. A ceramic, metal ceramic or resin-based composite used extraordinary mean on model to produce prostheses, which replace missing teeth, enhance aesthetics, or restore damaged teeth. So this is the basic definitions of restorative materials. अच्छा प्रिवेंटिव डेंटल मटेरियल सीमेंट्स कोटिंग और रिस्टोरेटिव मटेरियल देखो सीमेंट्स भी एक रिस्टोरेटिव मटेरियल का काम कर सकता है कोटिंग भी कर सकता है रिस्टोरेटिव मटेरियल अलग एक कैटेगरी है जो कि प्रिवेंशन और प्रिवेंटिव भी काम कर सकते हैं that either seal pits and fissure or release therapeutic agents such as fluoride or mineralizing ion to prevent or to arrest the demineralization of tooth structure. देखो प्रिवेंशन दो फॉर्म में प्रोवाइड होगा एक सीलिंग इफेक्ट्स की वजह से और एक रिलीजिंग इफेक्ट्स की वजह से फिशर सील्स हमारे पास लाइक जीआईसी जो है वो हमारे पास क्या करेगा फिशर सील करेगा जब फिशर सील होगा फिशर्स क्या है कनकेविटीज है कर्वेसेस है जब वो फिल होंगे सील होंगे तो वहां पर बैक्टीरियल इकम्युलेशन नहीं होगा तो कैरीज नहीं होंगे तो एक टाइप ऑफ प्रिवेंशन है इस तरह हमारे पास फ्लोराइड और मटेरियल है जो कि एंटी कैरियोजेनिक है तो और टीथ को फ्लोराइड की जो क्रिस्टल्स है या हाइड्रोक्सी क्रिस्टल्स है जो कि एक मिनरल्स है ना तो इन सब को एनहेंस करता है टीथ के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है डिमिनरलाइजेशन को इनहिबिट करता है तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव approach so preventive dental material are those material which prevent damage to teeth. Auxiliary dental material, very important definition you must remember. You will face this word many time in dental material. So what is auxiliary dental material? You might have learned, hear about auxiliary dental staff, auxiliary college staff. So auxiliary is what? Substance that is used in the construction of dental prosthesis, but that does not become a part of the structure. हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं एक फाइनल हम प्रोस्थेसिस बना रहे हैं उस प्रोस्थेसिस को बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और मटेरियल नीड होंगे तो वो मटेरियल जो कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज होता है लेकिन उस फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता उसको हम एक्सिलरी डेंटल मटेरियल कहेंगे so that's all thank you so much for watching if you learn something valuable from this video please give me a favor like this video or subscribe this channel and thank you so much for watching इस सीरीज में मैं सारे बेसिक डिफिनीशंस कवर करने वाला हूँ आपके जितने भी क्वेरीज है जितने भी शॉर्ट डिफिनीशन है जितने भी कंसेप्चुअल डिफिनीशन है वो मैं सब इस सीरीज में कवर करने वाला हूँ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें हर एक सीमेंट्स पर हर एक रेस्टोरेटिव मटेरियल पर अलग अलग 30 से लेकर 40 मिनट तक वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग